start. The appellant is a tenant in possession of the planned scheduled property belonging to the respondent from 19 September 1983 onwards under an unregistered lease deed executed by him in favor of the respondent stock. Monthly rent agreed between the parties is rupees 1100 per month. Stop. There is escalation in the monthly rent every year at the rate of rupees 50 per month. Stop. There is exchange of notice before suit between the parties. Stop. On 11 October 1991, the respondent issued a quit notice exhibit A6 under section 106 of Transfer of Property Act terminating the tenancy in favor of the appellant by the end of tenancy month of April 1992 and calling upon the appellant to hand over possession of the planned scheduled premises on the next date of the termination. Stop. The period of lease is 7 years. Stop. The said quit notice was issued after expiry of the lease terms agreed between the parties. Stop. The appellant issued a reply notice dated 25th April 1992, marked as Exhibit A10, taking the plea that he is a statutory tenant as per the provisions of AP Buildings Lease Rent and Eviction Control Act 1960, and therefore he is not liable to be evicted from the planned scheduled property. Stop. Before issuing the said reply notice exhibit A10, the appellant issued another notice dated 6 December 1992 marked as exhibit B12, styling it as an interim reply notice to the quit notice exhibit A6 issued by the respondent. Stop. In this interim reply notice exhibit B12, he merely informed the respondent that the deposited rent at the rent of rupees 1500 in the bank account of the respondent for the period from 1st October 1991 to 30th September 1992 through check number 497368 dated 5th October 1991 and called upon her to send a stamp receipt for the same stock. In fact, they said amount was not deposited in the bank account of the respondent plaintiff stock. On the other hand, it was deposited by the appellant in the bank account of the husband of the respondent stock. He made such a deposit long after the husband of the respondent plaintiff closing the said account in the bank concerned. Stop. Further discussions on the aspect will be made at the later part of this judgment. Stop. On 14 July 1992, the respondent filed the suit seeking four reliefs. Stop. The reliefs are to evict the defendant from the suit property and deliver possessions of the same to the plaintiff, to direct the defendant to pay a sum of rupees 25,000 by way of damages, to direct the defendant to pay past mean profits, future means profit at the rate of rupees 2500 per month from the date of the suit till the defendant delivers vacant possessions to the plaintiff, and to direct the defendant to pay the plaintiff past mean profits of rupees 6250 for the period from 1st April 1992 to 15 July 1992. Stop. According to the respondent, the appellant caused damage to the plaintiff's scheduled property. Stop. On that ground, the respondent claimed damages of rupees 25,000 from the appellant. Stop. The appellant filed a written statement denying the allegations in the plant. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप
इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।